नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन या ऑल ऑफ द अबव. तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट. तो फर्स्ट एंड सेकेंड जो है, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन है, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन है, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन है, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है. तो करेक्ट आंसर कौन सा है? फर्स्ट एंड सेकेंड. तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉइज are the cash flow from operating activities. Next question, in indirect method net cash flow from operating activities calculated on the basis of net profit after tax, net profit before tax, both 1 and 2, none of the above. So net profit before tax. Next question, which of the following are added to net profit after tax and extraordinary item to reach to net profit before tax and extraordinary item? Provision for tax made during the year, proposed dividend made during the year, interim dividend, transfer to reserve, general reserve and other reserve. Select the correct answer using the codes given below. All of these, first and second, first and third, second and third. तो all of these answer है. Next question, which of the following are cash flow from investing activities? Interest received, dividend received, interest paid, dividend paid. So select the correct answer using the codes given below. First and second, first and third, third and fourth, या all of these. So all of these है. Which one of the following is not category of cash flows required to be shown in the cash statement of cash flows? Cash flow from operating, cash flow from financing, cash flow from taxation, cash flow from investing activity. तो cash flow from taxation कुछ नहीं होता cash flow statement में, तो ये odd one out है. Which of the following items is not considered as cash or cash equivalent? Cash in hand, demand deposit, bank borrowings, investment with a maturity of 2 months from the date of acquisition. तो bank borrowings नहीं आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो? डिक्रीज इन डेटर, इशू ऑफ शेयर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर, सेल ऑफ फिक्स एसेट. तो डिक्रीज इन क्रेडिटर. Each of the following is not a cash outflow? Increase in prepaid expenses, increase in debtors, increase in stock, increase in creditors. तो आंसर है इंक्रीज इन क्रेडिटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द फंड फ्रॉम ऑपरेशन, डिटरमाइनिंग द फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव. तो बोथ 1 and 2 आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स, फंड इन फ्लो एंड फंड आउटफ्लो, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, सोर्सेज एंड एप्लीकेशन, नन ऑफ द अबव. तो सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस. फंड फ्रॉम ऑपरेशंस इज सोर्सेज ऑफ द फर्म्स, एप्लीकेशंस ऑफ द फर्म, नीदर 1 and nor 2, none of the above. None of the above आंसर है. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आर कंसिडर्ड टू बी रिसोर्स टू द एंटरप्राइज, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एप्लीकेशंस ऑफ एंटरप्राइज, नन ऑफ द अबव. तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है. द ट्रीटमेंट ऑफ करंट ईयर डेप्रिसिएशन विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इन डिटरमाइनिंग द फंड फ्रॉम ऑपरेशन, टू बी एडेड, टू बी मल्टीप्लाइड, टू बी डिडक्टेड, टू बी डिवाइडेड. तो टू बी एडेड. फंड फ्लो मीन्स अ स्टेटमेंट, अ स्टडी ऑफ वर्किंग